Hi, all the students. Welcome to AceCat once again. And today we are going to discuss the most important common traps where generally the paper setter sits in an RC passage. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे passages already आप लोग solve कर चुके हो. And I see the experience of so many students as well. A majority of the students they keep saying, sir, among the four options we are able to identify these two are not the correct answers. बट जो बचे हुए दो ऑप्शंस होते हैं उनमें से विच इज द करेक्ट आंसर वी ऑफन कमिट अ मिस्टेक इन दैट students to understand why does it happen, and moreover students despite shortlisting two options still why we are not able to find out the correct answer and why the mind is more tend towards the wrong answer. This is something which we need to understand in today's session. And students दो ऑप्शंस तक पहुंचने के बाद हम अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, that becomes the subject matter of today's discussion. And to understand this, it becomes important, first of all, we need to understand the paper setter's psychology. एक पेपर सेटर जब भी क्वेश्चन पेपर बनाता है तो किन चीजों को वो ध्यान में रखता है, and ultimately on the basis of what he actually makes the questions and the options. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I were the paper setter of CAT, मैं क्या करता स्टूडेंट्स, कहीं से एक पैसेज लेता and I would have drafted one question. अब स्टूडेंट्स मुझे चार ऑप्शंस ड्राफ्ट करने हैं. ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड अब तो बहुत सारे एआई के टूल्स भी अवेलेबल हैं, बट आज के कुछ साल पहले तक ओके पेपर सेटर्स हर ऑप्शन को ड्राफ्ट करता था, लिखता था, अंडरस्टैंड. अब आप जस्ट इमेजिन करो स्टूडेंट्स मुझे चार ऑप्शंस ड्राफ्ट करने हैं. दो ऑप्शंस मैं ऐसे ड्राफ्ट करूंगा जिसमें मैं खुद बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो बचे हुए दो ऑप्शंस हैं उनमें से एक आंसर मैं सही लिखूंगा और एक आंसर मैं ऐसा लिखूंगा विच विल बी वेरी मच अपीलिंग but it will not be correct. So possibly that option will be very much appealing, will be very much engaging. उसे पढ़ते हुए स्टूडेंट्स ऐसा लगेगा yes this has to be the correct answer. But students थोड़ा सा deeply analysis करोगे तो you will realize no, this is not the correct answer. Even if that option has got 10 possible reasons why it has to be selected, there can be one minor reason why that option has to be rejected. And students many times it happens that because of the pressure of time or anything else, वो जो माइनर रीजन होता है हम कई बार उसको ओवरलुक करते हैं. तो अब स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान में देना है कि जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है बस उसे फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करना है. हम कई बार स्टूडेंट्स को कहते हैं इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमको थोड़ा सा क्रिटिकल होना है, हमको चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना है, हमको चीज़ों को रिजेक्ट करना है. और जिस ऑप्शन को स्टूडेंट्स हम रिजेक्ट ना कर पाए अल्टीमेटली दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. वैसी बहुत सारी बातें मैं अपनी पुरानी लाइव सेशंस में भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा एक पेपर सेटर स्टूडेंट को ट्रैप कैसे करता है. एक पेपर सेटर जब ऑप्शन लिखता है तो कैसे वो ऑप्शन को बहुत अपीलिंग बनाता है बट स्टिल द आंसर इज नॉट करेक्ट. So how subtly he works, and we will discuss the subtleties and nuances of the various options. तो ऐसे 5-7 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा and moreover with examples. जो passages already CAT में आ चुके हैं, I have taken some parts of those passages to make you understand one by one each and every point. So students we will try to understand the common traps, and I believe that वैसे तो students हम लोग already बहुत चीजें जानते हैं, पर क्या होता है ना एक structured approach. अगर सारे points हमारे सामने हो one by one students objectively हमको पता हो कि these are the common traps, believe me mind बहुत ज़्यादा orient हो जाएगा. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यू पीपल वुड बी वेरी क्लियर अबाउट yes these are the 5 or 7 types of traps. So ultimately the mind will think objectively and possibly we may get we may actually save ourselves from getting entrapped in that. So that is what the purpose of today's live. Okay, चलिए. So hi all the students, done. I know that कुछ questions भी आप लोगों के होंगे, but anyway we will keep discussing the questions later on. आज जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं और जितने भी स्टूडेंट्स इसको बाद में वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, इस पूरे वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखना. मैं कई बार बच्चों को कहता हूं व्हेन यू पीपल डोंट हैव द पेशेंस टू वॉच अ वीडियो ऑन आरसी, बिलीव मी स्टूडेंट्स यू डोंट हैव द पेशेंस टू सॉल्व द आरसी आल्सो. आरसी में स्टूडेंट्स इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, अंडरस्टैंड. हो सकता है कई बार एक बार पढ़ के हमें समझ में ना आए. ऑप्शंस को भी स्टूडेंट्स माय रिकमेंडेशन विल बी at least twice you will have to read all the options before you mark the correct answer. आज के बाद ये जो 5-7 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, 5 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ
3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ध्यान में रखने की बातें, लेकिन पॉसिबली उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होता। पर 5 पॉइंट्स जो जेन्युइनली आपके लिए एक ट्रैप होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। So here we start with the very first point. Now see. अब स्टूडेंट, ये पूरा डिस्कशन मैं आपके साथ कैसे करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। I've taken a particular part of a passage which has actually come in CAT. And students, there is one question based on that. मैंने स्टूडेंट्स उतना हिस्सा लिया है जिससे आप एक्चुअली समझ सको what should be the answer to this particular question. And then स्टूडेंट, जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जब मैं कहता हूं कि पेपर सेटर आपको कैसे ट्रैप करता है फॉल्स इन्फरेंस में। कई बार स्टूडेंट्स आप देखोगे व्हाट इज रिटन इन द पैसेज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू ड्रॉ द इन्फरेंस। अच्छा, मैं कई बार बच्चों को देखता हूं कि इन्फरेंस और कंक्लूजन में हम लोग ऑफन कंफ्यूज होते हैं। मैं आप सबको कहता हूं, आप है ना इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, इवन इफ यू पीपल कंसीडर दीज टू वर्ड्स वन एंड द सेम, to give the answer, there is no problem at all. So what is the meaning of inference? Conclusion. Now many times paper setter बहुत ही सटल तरीके से ऐसा ऑप्शन ड्राफ्ट करेगा जो एक्चुअली एक गलत इन्फरेंस होता है। दिखता बिल्कुल सही है, but possibly that answer may not be correct. And students, I believe that this example which I have taken becomes the best example to understand it. Okay? चलिए, जो भी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ओके, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, डन, थैंक यू बेटा। इस एग्जांपल को अपन ढंग से समझते हैं। एक बहुत अच्छा पैसेज आया था कैट में बेस्ड ऑन स्टोइसिज्म। ओके, आई गेस यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग स्टोइक। इवन इफ स्टूडेंट्स यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइक, इस पर्टिकुलर पार्ट को समझना विल नॉट बी वेरी मच टफ फॉर अस। नाउ सी, स्टोइसिज्म का जो पैसेज है उसमें स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइसिज्म and how we people react to anything which happens to us. एक रिएक्शन होता है जो कि इंस्टेंट होता है, और एक रिएक्शन होता है where we people take some time, we think and then we react. अब आप जस्ट इमेजिन करो, एक एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर what could have happened if an army general accused Marcus Aurelius of treason in front of other officers. Now you people try to understand, जब मैं लिखता हूँ फॉर इंस्टेंस, इसका सीधा सा मतलब है this actually becomes an example. So you people understand, ये जो situation the author is imagining, this actually just becomes an imagination. This just becomes a fiction. The student, you people do understand, Marcus Aurelius, yes, he was a historical man, and moreover, students, almost 1800 years back, he was the king of Rome. But even if you people don't know that, it hardly matters. क्योंकि स्टूडेंट्स हमें जो भी कंक्लूजन निकालना है, that will be purely on the basis of what is given here. Now see, so the author says, for instance, consider what could have happened if an army general accused Marcus Aurelius of treason in front of other officers. Treason का मतलब क्या होता है? एक तरह से ट्रेटर होना, धोखेबाज होना, understand. The first moment for Marcus may have been surprise and anger in response to this insult. The second moment is what one does next about the emotion. Examples of second moments for Marcus might have included a plot to seek revenge, क्या को बदला लेने की सोचना, actions signifying deference and appeasement. Deference का मतलब होता है respect, and appeasement का मतलब है शांत रहना, और perhaps proceeding as he would have proceeded whether or not this event occurred. Continuing to lead the Romans in a way that Marcus Aurelius believed best benefited them. तो हो सकता है वो बदला लेता, हो सकता है वो शांत रहता, या हो सकता है वो इग्नोरेंट होकर एक रूल करता रहता, लीड करता रहता रोमन्स को। Now this is the paragraph which is given to us and this question is based on that. अब स्टूडेंट्स, अब देखो, which one of the following statements would be an accurate inference from the example of Marcus Aurelius? Accurate inference based on this example. Students, चारों options के पढ़कर, can you people try to give the answer? Yes, what can be the correct answer here? चलो मैं first option को लेता हूँ. Marcus Aurelius was humiliated by the accusation of treason in front of the other officers. Okay, Marcus Aurelius was humiliated. Humiliated का मतलब क्या होता है? Insult होना. By the accusation of treason
in front of the other officers. Possibly student जो भी लिखा है, on the basis of that, I see so many students giving first option as the correct answer. Second option says Marcus Aurelius was one of the leaders of the Roman army. C. Marcus Aurelius was a Stoic whose philosophy survived into the Roman era. हालांकि इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स वो स्टोइक है ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं अंडरस्टैंड. तो थर्ड ऑप्शन वी पीपल कैन इजीली रूल आउट. And Marcus Aurelius plotted revenge in his quest for justice. Students, I think Marcus Aurelius क्या क्या कर सकता है? We were thinking of that. उनमें से एक ऑप्शन था रिवेंज लेना. बट ये कहना कि उसने रिवेंज लिया या उसने प्लॉट किया, आई थिंक स्टूडेंट्स even this conclusion is wrong. Even if there are some keywords which are directly given here. One very important piece of advice. Students हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी ऑप्शन में purely on the basis of keywords, never try to give the answer. Paper setter जो सबसे पहले ट्रैप करता है, they will give such options where the keywords are one and the same, but still the meaning will be different. Students, वो revenge plot कर सकता है. That is one of the options in front of him. But ये deduce करना कि उसने revenge plot किया, that is a wrong interpretation. So I think by now, a majority of the students will be able to identify that third and fourth options cannot be the correct answer. Now there are two options left with us, the first and the second. And I know that majority of the students possibly will be marking the first option. Because students आपको लगेगा कि yes, जो Marcus Aurelius के साथ हुआ, तो yes, he was humiliated by the accusation of treason. But you people do understand. यहाँ पर क्या लिखा है? For instance, consider what could have happened if an army general accused आपके Marcus Aurelius of treason. So students, if I say if, इसका सीधा सा मतलब है this is not something which happened, but this just becomes an imagination. इसीलिए जिन बच्चों को लगता है कि इस पैराग्राफ के बेसिस पर first option should be the correct answer, I think students, you people have mistaken. First option cannot be the correct answer. And this inference is not true because that was just a condition, that was just an imagination. कि अगर ऐसा हुआ होता तो possibly Marcus Aurelius क्या करता, understand. But whatever is written here, यहाँ पर students लिखा है, he will continue to lead the Romans. Now this is not the imagination. This is something वो already कर ही रहा था, understand. So purely on the basis of that, I can 100% deduce that Marcus Aurelius was one of the leaders of the Roman army. So if I say one of the leaders of the Roman army, he was. Indeed, he was. And we can deduce purely on the basis of this paragraph. So students, सबसे पहला पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करेगा एक गलत इन्फरेंस देकर. और कई बार स्टूडेंट्स हम जब इन्फरेंस निकालते हैं फॉल्स अजम्पशंस लेकर चलते हैं. स्टूडेंट्स, इस बारे में वी विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. जो इन्फरेंस है that has to be purely on the basis of what is given in the passage. Any extra deduction, any extra assumption, this is something which you people have to avoid. आप तो सिंपल सा ये देखो, क्या जो मैं deduce कर रहा हूँ, क्या मैं पूरी तरह से इस passage के basis पर deduce कर सकता हूँ या नहीं? तो कुछ भी extra assumption लेने की जरूरत नहीं है. अगर स्टूडेंट यहाँ पर नहीं लिखा होता कि he will continue to lead the Romans, तो possibly मुझे नहीं पता चलता कि ये एक्चुअल में था कौन, अंडरस्टैंड. एंड पीपल डू अंडरस्टैंड. अगर मुझे पता भी है कि यस ही वाज द लीडर ऑफ रोमन आर्मी, बट स्टिल इफ दैट रेफरेंस वाज नॉट गिवन हियर, आई वुड नेवर हैव गिवन सेकंड ऑप्शन एज द आंसर. बट बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस वी आर एबल टू डिड्यूस द सेकंड ऑप्शन. बट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दैट वाज जस्ट एन इमेजिनेशन. सो दिस बिकम्स द फर्स्ट ट्रैप, सबसे बड़ा ट्रैप, एंड दैट इज गलत इन्फरेंस देना. तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चंस को करोगे तो बेटर है. नाउ कमिंग ऑन द सेकंड ट्रैप. Coming on the second trap, yes. Now see, if I talk about the second trap, distorting the sentence. Now even this becomes a part of a particular passage which came in CAT. And students, I want you people to pause this video, go through this paragraph, and among the four options, you will have to give the answer, okay, to this question. Again, this question is based on inference only. But कैसे एक पूरे सेंटेंस को डिस्टॉर्ट किया जाता है, इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, क्या 2019 का ये पूरा पैसेज था, एंड दिस वाज अ पैसेज अबाउट okay, plastic pollution. This was a passage about how the companies
which are mass producing so much of plastic, how they are, instead of taking the blame, they are actually putting the blame on the consumers. चलिए, anyway students, अगर आपको context नहीं भी पता होगा, I have taken that much part of the paragraph which can help you to give the correct answer here. चलिए, अब इस passage को मेरे साथ पढ़ना start करो. And students, it is always advisable कि कभी भी अपन पैराग्राफ को पढ़ें उसके पहले आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखो. So when I say that, it can be inferred that the author considers Keep America Beautiful organization. So anyway, students, we need to infer about this organization. So yes, while reading the paragraph, back of the mind, you will have to keep it. Now see. Beginning in the 1950s, big beverage companies like Coca-Cola and Anheuser-Busch, along with Philip Morris and others, formed a non-profit called Keep America Beautiful. Its mission was to educate and encourage environmental stewardship in the public. At face value, these efforts seem benevolent. Now see, students, try to understand. Its mission was to educate and encourage environmental stewardship. Stewardship का मतलब होता है leadership, understand, in the public. At face value मतलब दिखने में, ऊपर से दिखने में, these efforts seem benevolent. Benevolent का मतलब है charitable होना. The students try to understand, these efforts seem benevolent. इसका मतलब है the author does not consider these efforts to be benevolent. They seem benevolent, but they obscure. Obscure का मतलब है hide the real problem, which is the role that corporate polluters play in the plastic problem. The students, they seem benevolent, but they are not. And they hide the real problem. And what is the real problem? The role that corporate polluters play in the plastic problem. This clever misdirection has led journalist and author Heather Rogers to describe Keep America Beautiful as the first corporate greenwashing front. Now, students, what is the meaning of greenwashing? कभी आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, आई वॉश, isn't it? So what is the meaning of eye wash? किसी की आंखों में धूल झोंकना, इसको स्टूडेंट्स अपन कहते हैं आई वॉश, isn't it? कोई चीज डिसेप्टिव होना, प्रिटेंड करना, दिखाना कुछ और रियलिटी में होना कुछ और, उसको आई वॉश कहते हैं. ग्रीन वॉश भी स्टूडेंट्स, इट हैज अ सिमिलर मीनिंग. बट अगर मैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड किसी धोखे की बात करूं, दिखाया कुछ और जा रहा है कि हम एनवायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं, बट पैराडॉक्सिकली हम कर कुछ और रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक वर्ड आता है ग्रीन वॉश. नाउ सी, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कीप अमेरिका ब्यूटीफुल, हीदर रोजर्स described this organization as the first corporate greenwashing front, as it has helped shift the public focus to consumer recycling habit. So instead of taking the blame on its own, it has shifted the blame on the consumers. And that is the reason ये दिखने में चैरिटेबल है, लेकिन वास्तव में चैरिटेबल नहीं है. अब स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कीप अमेरिका ब्यूटीफुल के बारे में, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ? स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जो भी बच्चे लाइव हैं, कैन यू पीपल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन? और जितने बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज एंश्योर दैट. ओके, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले खुद सोचना व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. चलो लाइव वाले स्टूडेंट्स, कम ऑन, गिव द आंसर. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और ये जितने पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, 100% दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आप तो स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए चलो, एंड डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग, so don't miss them. So possibly many of the students may think like, okay, first option should be the answer. Is it? कई सारे बच्चों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, yes or no? चलो कुछ ऑप्शंस को अपन रूल आउट कर देते हैं. Anyway, third and fourth, I think maximum students will be able to rule out. So an important step in sensitizing producers to the need to tackle plastics pollution. That is not an important step in sensitizing producers. Students, ये दिखता चैरिटेबल है, बट एक्चुअल में है नहीं. तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन तो किसी भी एंगल से हो नहीं सकता. फोर्थ ऑप्शन कहता है एन इनोवेटिव एग्जांपल ऑफ अ कोलैबोरेटिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव. इवन फोर्थ ऑप्शन इज अ वेरी पॉजिटिव ऑप्शन. बट स्टूडेंट्स, कीप अमेरिका ब्यूटीफुल को लेकर ऑथर का जो ओपिनियन है, दैट इज नॉट पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अंडरस्टैंड. मैं जानता हूँ स्टूडेंट, जब हम डेप्थ में जाते हैं, किसी भी पासेज के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं.
बट एटलीस्ट द डाइकोटोमी इज, टोन तो दो ही है ना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी पॉइंट को लेकर या किसी भी ओपिनियन को लेकर या किसी भी इशू को लेकर ऑथर के ओपिनियन को सेग्रीगेट कर सको कि ऑथर का ओपिनियन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई थिंक स्टूडेंट्स ये टोन को समझना हमें कम से कम 4 में से 2 क्वेश्चंस के आंसर सही देने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स अगर और कुछ नहीं समझ सके ना, टोन जरूर समझ लो कि ऑथर का टोन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो कीप अमेरिका ब्यूटीफुल को लेकर द टोन ऑफ द ऑथर इज नेगेटिव। ही सेज दैट इट सीम्स बेनिवोलेंट बट इट इज नॉट। इसीलिए 3rd and 4th कैनॉट बी द आंसर। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर ग्रीन वॉशिंग वर्ड इज गिवन हियर, यस इट इज ग्रीन वॉश। तो एग्रीड कि ऑथर ने भी हीदर रोजर्स को कोट किया और हीदर रोजर्स कहता है कि यस इट वाज द फर्स्ट ग्रीन वॉशिंग फ्रंट। इसका मतलब है कीप अमेरिका ब्यूटीफुल, इट इज अ ग्रीन वॉश, एग्रीड। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ बेनिवोलेंट अटेम्प्ट टू इंप्रूव पब्लिक रिसाइकलिंग हैबिट्स। अब पॉसिबली अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं समझेगा, he will think like first option is the correct answer। उसे लगेगा यस सर बेनिवोलेंट लिखा तो है, बट स्टूडेंट्स यू पीपल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, बिकॉज इट वाज बेनिवोलेंट, इट वाज बेनिवोलेंट अटेम्प्ट टू इंप्रूव पब्लिक रिसाइकलिंग। वाज इट बेनिवोलेंट? नॉट एट ऑल। To understand, it was genuinely not benevolent. It seems benevolent, but actually it was not. That is the whole idea. Basically, students, you people do understand. First option, yes, it is greenwash, but the reason which is given is it seems benevolent, but it is not. But यहाँ पर मैं रीजन दे रहा हूँ कि yes, it is benevolent, therefore it is greenwash. तो स्टूडेंट्स अगर benevolent होता तो greenwash कैसे होता? इसीलिए first option is not correct. Possibly many of the students may get attracted with this option. अब स्टूडेंट्स पेपर से करने हैं, अच्छा ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ना, दैट इटसेल्फ वाज एन आई वॉश फॉर यू। एंड सेकंड ऑप्शन में पेपर सेटर ने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, आई वॉश का एक और सिनोनिम होता है शैम। शैम का मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर, दिखाता कुछ और है होता कुछ और है। A sham as a diverted attention away from the role of corporates in plastics pollution. Okay, a sham, understand? तो इसीलिए स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन is indeed the correct answer, because yes, it is an eye wash because it diverted attention away from the role of corporates and plastic pollution. और ये attention किस पे shift कर रहा है, consumers पर। So therefore second option becomes the correct answer. Agreed? Done. तो second point ध्यान में रखना, sentence को किस तरह से distort किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन को पेपर सेटर ने कैसे डिस्टॉर्ट किया, लिखा वही जो पैसेज में है बट मीनिंग वाइज पूरा चेंज कर दिया। So be careful about this as well. Coming on students, the third important thing. अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कॉज एंड इफेक्ट को लेकर। आप देखोगे स्टूडेंट्स पूरे कैट के पेपर में एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। पॉसिबली स्टूडेंट्स पैसेज में कॉज कुछ और है, इफेक्ट कुछ और है, एंड ऑप्शन में हमने बहुत ही ब्यूटीफुली सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम किया, जो इफेक्ट था वो कॉज बन गया, जो कॉज था वो इफेक्ट बन गया। अब क्योंकि कीवर्ड सेम है, सेंटेंस का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट वन एंड द सेम है, तो स्टूडेंट्स वोंट रियलाइज दिस चेंज एंड दैट इज द रीजन दे ऑफन गेट मिस्टेकन। तो सबसे पहला पॉइंट गलत इन्फरेंस ड्रॉ करना, सेकंड सेंटेंसेस को डिस्टॉर्ट कर देना, एंड थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट, कॉज को इफेक्ट बना देना, इफेक्ट को कॉज बना देना। So that becomes the next mistake. A simple say example to make you understand. As job opportunities shrink and financial insecurity grows, many individuals, especially among the youth, find themselves frustrated and desperate. So students, what is the cause? Job opportunities का shrink होना, financial insecurity का grow होना. So because of that, the outcome is many individuals find themselves frustrated and desperate. अब students just imagine this was the sentence given in one of the paragraphs. अब students किसी ऑप्शन में ये लिखा है, the growing frustration and desperation among the youth. Yes, ये यहाँ पर mentioned है कि yes, frustration and desperation बढ़ रहा है among the youth have led to a shrinkage in job opportunities and financial insecurity. अब see students, the keywords are one and the same. पता चला कैसे हमने पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन एंड डेस्परेशन की वजह से श्रिंकेज हो रहा है, जबकि जो केस है वो अदर वे राउंड है।
तो बस ये तो छोटा सा सेंटेंस था, तो पॉसिबली स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। बट जब कैट में 500 वर्ड्स का एक पूरा पैसेज होता है, तो वहां पर मेनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, I'm very confident 1 or 2 questions will be based on this logic of cause and effect. And that is the reason my piece of advice to every student. कभी भी स्टूडेंट्स आप कुछ पढ़ो ना, कॉज एंड इफेक्ट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर डीप एनालिसिस करना है किसी भी घटना के पीछे, व्हाट इज द कॉज, व्हाट विल बी द इफेक्ट, अगर ये एनालिसिस अपन करते चलें तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स एक्यूरेसी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, जब फोर्थ पॉइंट, अवॉइड एक्सट्रीम्स। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कई सारे ट्यूटर्स बहुत सारे एग्जाम्पल से ये बताते रहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स, आप सब लोग अगर बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, तो मैंने अपने भी कई सारे लाइव सेशंस में कहा था एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमें अवॉइड करना है। अंडरस्टैंड, if I make a sentence like, yes, the students are preparing well for CAT 2025 and they really want to score well in almost all the sections of CAT. Now, for example, if this becomes a sentence given in one of the passages, and on the basis of this, अगर मैं कोई option दे दूँ, each and every student of CAT 2025 is really preparing well to score well in all the sections. Now, you people understand, this option is not correct. Because when I say the students of CAT 2025, how can I take the extreme assumption at each and every CAT aspirant? Possibly बहुत सारे बच्चों ने CAT के फॉर्म्स भरे हैं, but they may not be a serious CAT aspirant. या स्टूडेंट्स अगर मैं कोई ऑप्शन इस तरह से लेकर चलूँ that the students preparing for CAT, they are really working hard to score the highest marks in all the 3 sections. But do understand, even this becomes an extreme option. तो जब मैं कहता हूँ स्कोर वेल, तो क्या वेल को आप हाईएस्ट लेके चल सकते हो? नॉट एट ऑल। तो बस ऐसी कुछ गलतियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जरूर करो बेटा। तो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ए क्लास, नेशनली वन ऑफ द बेस्ट, एंड यस एज कैट को अपना फ्रेंड बना लो। और जितने कैट 2026 के स्टूडेंट्स हैं, मेक इट द पॉइंट अभी से आप हमारे साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो and you will have wonderful results. चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल, a huge problem, ये जो पैसेज हमने लिया था ना प्लास्टिक पोल्यूशन वाला, उसी का एक और पार्ट है। A huge problem with plastic is the result of a permissive legal framework that has allowed the uncontrolled rise of plastic pollution despite the clear evidence of the harm it causes to local communities and the world's oceans. Now see students, our huge problem with plastic is the result of a permissive legal framework that has allowed the uncontrolled rise of plastic pollution despite a clear evidence. स्टूडेंट्स, हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस तरह का बना हुआ है कि हम मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कंपनीज को परमिट करते हैं to manufacture whatever amount of plastic they want to, and that is the root cause of plastic pollution. That is the essence of this line. और अगर पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो लार्जर जो पिक्चर है वो ये एसेंस है जो मैंने डिस्कस किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस वुड द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑथर ने स्टूडेंट्स आपके सामने रीजन को डिस्कस किया। ओके, परमिसिव लीगल फ्रेमवर्क इज द मेन रीजन। ऐसे लॉज बना देना जिसमें आपने कंपनीज को अलाउ कर दिया कि आप चाहो जितना मैन्युफैक्चर करो। That is the root cause of plastic pollution. अब इसका आउटकम क्या होगा? इसके बेसिस पर स्टूडेंट्स व्हाट कैन बी अज्यूम? आखिर ऑथर चाहता क्या है? कंप्लीटली बैनिंग प्रोड्यूसर्स? ओके, सेकंड, पासिंग रेगुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस बिकम्स एन एक्सट्रीम ऑप्शन। So the correct answer is fourth one. This is how you people will have to understand. तो कहीं पर भी कोई भी एक्सट्रीम ऑप्शन आ जाए, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छा, एक्सट्रीम में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता कि हमेशा कंप्लीटली आएगा, ईच एंड एवरी आएगा, ऑल आएगा। एक्सट्रीम किसी भी तरह से हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ किसी पैसेज में आई सेल्डम डू दिस और ऑप्शन में लिख दूँ आई नेवर डू दिस, तो स्टूडेंट्स इवन दैट बिकम्स एक्सट्रीम। सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है, बट दैट डज नॉट मीन नेवर एट लीस्ट। ओके, आई ऑफन गो देयर। अब इसका स्टूडेंट्स में अगर लिख दूं कि आई फ्रीक्वेंटली गो देयर,
I regularly go there. I go there on a daily basis. Okay, so students, that becomes an extreme option. So this is how you will have to understand. Forever, never, these are extreme options. So be careful about these words as well. Okay, coming on students, the first one, same sense, different tone. मैंने अभी जस्ट बोला था स्टूडेंट्स, कभी भी कोई पैराग्राफ पढ़ो, always try to understand what is the tone of the paragraph. And students, the moment you are able to understand whether the author is positive or negative, I think students, option mark करना will become easier. अब students, इस पूरे पैराग्राफ को मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो. Recent environmental reports emphasize that while climate change poses significant risk to global agriculture, there are also opportunities for adaptation. Some regions might benefit from a longer growing season, while others will need to implement new agricultural practices to maintain productivity. Scientists urge caution, as these adjustments require careful planning and research to avoid potential negative outcomes, such as soil depletion or water scarcity. Ultimately, while adaptation is possible, it must be approached with measured optimism and a clear understanding of the challenges. So students understand. Scientists urge caution. It requires careful planning. We should proceed with measured optimism. Okay, and we need to understand the challenges. In सबसे पता चलता है what is the tone of the author? Tone of the author is, okay, he says that changes, even if we are adapting, we will have to be careful. So students understand the tone is cautionary. Okay, the tone is not like we have to be over optimistic or we will have to be too pessimistic. तो कभी भी स्टूडेंट्स आप देखोगे प्रॉपर टोन के साथ अगर ऑप्शन को आइडेंटिफाई करोगे, आई बिलीव दैट करेक्ट आंसर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. अब देखो, which of the following statements best captures the passage's stance on the relationship between climate change and agriculture? First option, climate change offers new opportunities for global agriculture, and these can be readily leveraged with appropriate adaptations. ठीक है, इसने appropriate तो बोला है, but यहाँ पर students the tone of the author is seems to be very optimistic. कि नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज और हमें लेवरेज करना चाहिए. जबकि स्टूडेंट्स हमें केयरफुल भी होना है, अंडरस्टैंड. हो सकता है इसका कुछ नुकसान भी हो. And that is the reason we need to understand the challenges also. Second, climate change will devastate global agriculture unless radical adaptation measures are implemented immediately. अब स्टूडेंट यहाँ पर ऑथर का टोन इट इज टू पेसिमिस्टिक. ओके, isn't it? Will devastate unless we do this. जबकि ये टोन है ही नहीं ऑथर का. Third, climate change threatens global agriculture, but with cautious and strategic adaptation, there may be ways to mitigate its impact. Students, threatens global agriculture. Yes, खतरा है. आप देखो, recent environmental reports emphasize that climate change poses significant risk. Yes, risk है, understand. So threatens global agriculture, absolutely correct one. But with cautious and strategic adaptation, I think जितनी भी keywords मैंने highlight किए, all match this particular one. So C seems to be the correct answer. Both, with adaptation, global agriculture can overcome the challenges posed by climate change and emerge more resilient. The students, the point is, global agriculture will emerge more resilient, more stronger. That is not the point. हालांकि फोर्थ का टोन फिर भी ठीक है, और अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ दोनों को कंपेयर करूं, तो कॉशनरी टोन का जो बेस्ट एग्जांपल होगा दैट इज थर्ड ऑप्शन. तो देयरफॉर स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर इज थर्ड. अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शंस में मोर और लेस सेम बातें लिखी है, पर स्टूडेंट्स स्लाइटली जो टोन है दैट शुड आल्सो मैच. तो इसी वजह से थर्ड ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके, एंड फोर्थ कहता है कि विद अडैप्टेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर कैन ओवरकम द चैलेंजेस पोस्ट and emerge more resilient. Overcome the challenges posed. यहाँ तक तो ठीक है, but emerge more resilient, even students, that becomes one extra addition that is not given in the paragraph. So students, the best answer is C. कभी कभी किसी ऑप्शन में स्टूडेंट्स आप देखोगे आउट ऑफ द स्कोप कुछ भी जोड़ दिया जाएगा. वो ऑप्शन पार्शियली करेक्ट हो सकता है, बट पार्शियली उसमें कुछ add on information which we are not given in the passage. So we will have to be careful there also. जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए. पार्शियली करेक्ट होना, पार्शियली गलत, दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स.
कुछ और फाइनल पॉइंट्स। कभी कभी कुछ ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू होते हैं बट दे आर नॉट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। तो पैसेज के अकॉर्डिंग वो सही तो होते हैं बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं होते हैं, तो बी केयरफुल इन दैट ऑल्सो। सेवेंथ पॉइंट, टू नैरो और टू ब्रॉड। कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस बहुत नैरो होते हैं और कुछ बहुत ब्रॉड। मतलब जनरली वी गो फॉर हेस्टी जनरलाइजेशंस। ओके, हमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जनरलाइज करने से बचना चाहिए। ओके, मान लेते हैं कोई एग्जांपल दे रखा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओके पूरी कम्युनिटी के बारे में या सभी लोगों के बारे में कोई चीज डेड्यूस करना, ये हिस्ट्री जनरलाइजेशंस है। ओके, तो जल्दबाजी में कोई भी चीज जनरलाइज नहीं करना, अंडरस्टैंड। तो कुछ डाउट जरूर रखना, हर चीज को जनरलाइज नहीं करेंगे। तो टू नैरो और टू ब्रॉड, डायरेक्ट चेंज इन अ वर्ड, यू पीपल टू अंडरस्टैंड। कई बार वर्ड को डायरेक्टली बदल दिया जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स आप देखोगे कैट में इतने सिंपल से ट्रैप्स होते हैं। जैसे पैसेज में कहीं पर लिखा है नदर्न हेमिस्फीयर, और ऑप्शन में लिखा है सदर्न हेमिस्फीयर। बाकी सारी बातें उस ऑप्शन में बिल्कुल सही है, पर एक वर्ड में स्टूडेंट चेंज है एंड दैट इज द रीजन द कंप्लीट आंसर इज रॉन्ग। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इन 7 पॉइंट्स को अगर अपन ध्यान में रखें, एक्यूरेसी 100% इंप्रूव होगी। रीडिंग कॉम्प्रेंशन में स्टूडेंट्स मजे से पढ़ो, टेक इंटरेस्ट इन दैट। एंड स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई बिलीव दैट। मैंने बहुत चीजें पढ़ाई लाइफ में, पर जितना मजा आरसी पढ़ाने में आता है, और एक आरसी जब पढ़ाते हैं तो इट इज नॉट इंग्लिश बेसिकली, दैट बिकम्स द डिस्कशन इज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द आरसी। एक पूरा सब्जेक्ट डिस्कस हो जाता है। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रेंशन की क्लास कभी फिलोसॉफी की क्लास होती है, कभी इकोनॉमी की होती है, और कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिस जॉनर का पैसेज है उसके अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट मैटर बिकम्स। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, सो सारे स्टूडेंट्स जो बाद में इस पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, मुझे पता है लाइव बच्चे इसलिए कम आते हैं, तो लाइव में वी कैन नॉट कंट्रोल योर स्पीड। ओके, बट रिकॉर्डेड में यू पीपल कैन कंट्रोल आवर स्पीड। 2x पे देखना, 1.5x पे देखना, बिल्कुल। अब वैसे भी धीरे बोलता हूँ, आराम से 2x पे देखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट स्टूडेंट्स देखो जरूर, अच्छा लगे कमेंट जरूर करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। इस चैट पर जबरदस्त कंटेंट आ रहा है, एंड स्टूडेंट्स कंटेंट आ रहा है, सिर्फ फालतू की बातें नहीं, अंडरस्टैंड कंटेंट जनरली। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।